Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing well. Students, as you all know that we have started this chapter metals and non-metals. Well, in your previous lecture, what we have discussed the history related to metals and non-metals. Okay, behind the discovery of metals. Also, we have seen how periodic table consists of metals and non-metals, how it has been differentiated or classified into, right? Also we have seen how or what is the position or arrangement of metals and non-metals in a periodic table. We have even discussed about electronic configuration. Okay, so today what we are going to study about physical properties of metals. See beta, this topic you are quite familiar with. Okay, whenever you will just go through the previous knowledge related to this topic, now you will recall all the particular topics related to this particular topic. Okay, everything, whether all the physical properties of metals and non-metals. Since today we are only discussing about metals, तो जितना भी आप metal से related properties पढ़ेंगे या जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, you will say that yes ma'am, we are quite familiar it with. We have already studied this in like in our 8th standard. Okay, so let us start them, let us revise them, let's recall all that knowledge that has been related to the properties of metal. Okay, so the first property says that metals are solid at room temperature. Okay, metals are solid at room temperature. So we know that most of the metals are what, not most, we can say all metals are solid at room temperature, but there is an exception, and you know what is the exception? That is mercury. It is what? It is liquid at room temperature. है ना, यहाँ पर exception कौन सा है? Okay, that is mercury, which is what? This is liquid at room temperature. Okay, but this general information you are having that yes, all metals are solid at room temperature, but mercury is the only metal that is liquid at room temperature. This basic idea you have, but do you know what is the reason behind that why mercury is liquid at room temperature? See, the reason is beta the configuration. Okay, configuration of mercury. Okay, देखिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, दैट इज एंटरिंग इनटू द s orbital. The last electron of mercury that is entering into the s orbital, which is what? Which is quite closer to the nucleus. Okay, so the arrangement, electronic arrangement of electron in s orbital is what? It is quite closer to the nucleus. And one more thing, that it is not it is not involved in losing an electron. Okay, mercury is not involved in losing an electron. जबकि मैंने आपको क्या बताया था, metals ट्रेंड्स पढ़ाते हुए metals की क्या प्रॉपर्टी होती है, that they very easily, है ना, they lose electron to gain what? To become electropositive, right? So to gain electric positivity and to become an electropositive, they readily lose electron. But here mercury is different. Okay, it is not involved in losing an electron. Secondly, it is the s orbital. Okay, the electron in s orbital is very closer to the nucleus. Secondly, यहाँ पर क्या है, it is not involved in metallic bonding as well, है ना, तो metallic bonding में भी वो involved नहीं है. तो metallic bonding मतलब क्या? जो outer most का जो electron है ना, वो क्या हो रहा है वहाँ पर? इट इज नॉट गेटिंग लूज. क्या हो रहा है वहाँ पर? वो लूज नहीं कर रहा है. ओके, सो ये सारे पॉइंट्स जो है दैट मेक्स मर्क्यूरी व्हाट? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. वैसे तो बहुत सारे रीजन है ना, जो आप आपके हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे, जैसे कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट ऑल्सो इंक्रीजेस, वो स्टार्ट हो जाता है. जो एस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है. तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि metals are what? These are solid at room temperature. Okay, but there is an exception, that is what? Mercury. It is liquid at room temperature. ओके, इतना आपको याद रखना है इन प्रॉपर्टीज. लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि इस मर्क्यूरी लिक्विड क्यों है
रूम टेम्परेचर पर। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? Next property says that metals are lustrous, okay, and can be polished. So all metals have this property. They are lustrous in nature. They have this shining surface, right? So this property belongs to metals. हमें पता है कि metals जितने भी हैं उनमें कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा ज़रूर होगी, लेकिन ये shining property जो है वो उनमें होती ही होती है. The metals, they shine. They have this lustrous property. Okay. Among this, gold and silver are what? These are the, हम बोल सकते हैं ब्राइटेस्ट शाइनिंग मेटल, हम बोल सकते हैं, है ना, बिल्कुल बोल सकते हैं. बट डू यू नो, व्हेनेवर व्हेनेवर द पर्टिकुलर सिल्वर और कॉपर, सिंस कॉपर इज आल्सो हैविंग अ शाइनिंग सरफेस, राइट, सो दिस कम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर और ऑक्सीजन, what happens, they react with oxygen, right, and an oxide layer is formed. Okay, so jab kabhi bhi if you have you have kept that metal for a very long duration, you have kept it outside for a very long duration, what happens, it reacts with the moisture, it reacts with the oxygen present in the moisture or in the atmosphere, and a layer of oxide is formed. Okay, तो black color appear होता है silver पर, that is what, that is the oxide that has been formed on silver. And if you observe copper getting reacted with oxygen, तो एक ऑक्साइड लेयर उस पर भी ग्रीनिश कलर की ऑक्साइड लेयर आपको देखने मिलेगी. सो इन शॉर्ट, इन जनरल, हम इन इस ऑक्साइड लेयर को हम क्या कहते हैं, दैट इज कोरोजन. ओके, सो कोरोजन इज हैपनिंग टू दिस पर्टिकुलर मेटल्स. गोल्ड वी से दैट इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल. जनरल बेसिस पे अगर हम देखें तो एकदम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है. हाँ, वो गलता ज़रूर है धीरे धीरे, लेकिन कैसा है, वो एकदम से रिएक्ट नहीं करता. जैसे सिल्वर तो भी एक बार का ब्लैक कलर में एक ऑक्साइड लेयर में दिखती है ना ऑक्सीजन के साथ. आप देखिए, आपकी मम्मी के पास कोई भी सिल्वर ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो समय के साथ साथ काले पड़ते हैं. अगर वो बाहर रखे तो बहुत जल्दी, है ना, बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं. तो अगर हमें उसकी शाइनिंग वापस चाहिए, तो what we can do, see, if you want to gain back that shining property of that metal, or to regain that shining property, what we do, we just take it to the what, jeweler, right, जो ज्वेलरी पर्सन होता है ना, जो ज्वेलर होता है, उसके पास हम लेके जाते हैं. there you might observe that one person, he is rubbing a sandpaper, you know, he rubs a sandpaper on that particular silver object. So sandpaper is doing what? It is removing the oxide layer. है ना, sandpaper क्या करता है? It helps in removing the oxide layer, and that is the reason we can regain the shining property and the metal becomes new. Okay, as pure as it was. तो सैंड पेपर यूज करता है वो, और उसे रब करने से जो ऑक्साइड लेयर है वो रिमूव हो जाती है. सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स अगर हम देखें बहुत ज़्यादा ब्राइटली शाइन करते हैं, जैसे उनकी शाइनिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, कुछ थोड़े से कम होते हैं. ठीक है, तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओके, द थर्ड वन इज व्हाट, metals are hard in nature. Okay, metals are hard in nature. Of course, metals are hard in nature. That is the reason that we use it on a very, I would say on a large scale, on a great extent, in building constructions, in making different objects, in making ships and sails, and where not. हम कहाँ यूज नहीं करते हैं जहाँ पर इतनी वर्सटाइल चीज़ों में उसका यूज हो रहा है, बिकॉज द रीजन इज व्हाट, दे आर हार्ड, दे आर सॉलिड इन नेचर, है ना. तो ये प्रॉपर्टी उन्हें क्या बनाती है, बहुत ही वर्सटाइल, बहुत ही यूजफुल बनाती है. ओके, तो हमें पता है कि मेटल्स जो है ना, वो क्या होते हैं, दे आर सॉलिड, दे आर हार्ड इन नेचर. बट आपको पता है कि नॉट ऑल मेटल्स, है ना, देर इज एन एक्सेप्शन इन दिस प्रॉपर्टी एज वेल. व्हाट इज द एक्सेप्शन हियर, दैट alkali metals. Okay, अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर, वो हार्ड नहीं होते. तो अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, बहुत सारे आपको पता है. कौन से हैं, लिथियम है ना,
सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है। ओके, तो ये सारे कौन से हैं, रुबीडियम है ना, रुबीडियम भी आप बोल सकते हैं, ये भी क्या है, ये अल्कली मेटल है। तो ये सारे अल्कली मेटल ये क्या होते हैं, दीज आर सॉफ्ट इन नेचर। ओके, so we all know that sodium is a metal, but it is the softest metal and we can cut it simply very easily with a knife as well, right? So this alkali metal, this is an exception in this property. On the other hand, if you observe that aluminium, copper, and iron, these are the hard one. Okay, they are quite hard. We cannot cut an iron with a knife. That is not possible. These are the, we could say that the hardest, not hardest, but these are having what property of hardness. Okay, so यहाँ पर ये exception कौन सा था, alkali metals, जहाँ पर lithium, sodium, potassium, cesium, rubidium, ये सब क्या है, ये alkali metal है और ये क्या होते हैं, soft in nature होते हैं. Okay, so I hope that this point is clear, right? Now next, that is fourth point, says that metals are malleable. Metals are malleable. Okay, we all know what is malleable, what is malleability. That the property by the virtue of which a metal can be beaten into what, thin sheets, है ना, that is malleability. That is the basic definition of malleability, है ना, कि ऐसे metals को क्या करते हैं, हैमर करने के बाद उन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट करना, बट रिमेंबर विदाउट ब्रेकिंग, यानी मेटल्स जो है बिना ब्रेक हुए क्या होते हैं, वो थिन शीट्स में कन्वर्ट होते हैं, राइट? सो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेलिएबल या मेलिएबिलिटी. सो ऑल मेटल्स दीज आर somehow are malleable in nature. They can be drawn into thin sheets, they can be converted into thin sheets. So among all metals, if you ask me which is the best malleable metal, then I will say that what, gold and silver. Okay, so gold and silver both are what, these are the best malleable metals, we could say, because we have seen very delicate gold leaf and silver foil, है ना, silver and gold foils we have seen, they are quite delicate. If you touch it with your finger, that will stick to your that particular fingerprint, है ना, तो ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं. तो आप खुद सोचिए कि वो कितने ज़्यादा मेलेबल होंगे, है ना. अब इसके बाद जो आते हैं वो कौन से हैं, दैट इज एल्यूमिनियम एंड कॉपर. इनके बाद इनका नंबर आता है, ठीक है, वेरिएबल तो आपको पता ही है, एल्यूमिनियम फॉइल दैट वी यूज फॉर पैकेजिंग एंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फूड, वी यूज इट एज एल्यूमिनियम फॉइल ना. तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ से आप पता कर सकते हैं कि मेटल्स आर, यस, दे आर क्वाइट मेलेबल इन नेचर, बट अमंग ऑल दिस मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर, gold is the first one, then comes silver, then the aluminum, and then the copper. Okay, in this way the bar or the ratio goes, right? So the next property is what, next property says that metals are ductile. Okay, metals are ductile. So what is the definition of ductility? If you can remember it, if you can recall it, ductility means what? The property by the virtue of which metals can be drawn into thin wires, है ना. ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स की जहाँ पर आप उसको क्या कर सकते हो, स्ट्रेच करके थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी. तो ऑल द मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू what can be drawn into thin wires somehow. परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो कर सकते हैं, अगर सोडियम पोटेशियम को हम हटा दें तो, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल्स वी कैन से दैट यस दीज आर डक्टाइल इन नेचर, हम बोल सकते हैं, है ना, बिल्कुल बोल सकते हैं. अगर इसमें भी आप डक्टिलिटी को भी अगर आप मेजर करते हैं तो अमंग ऑल द मेटल्स, एल्यूमिनियम, सॉरी, सिल्वर एंड गोल्ड, है ना, सिल्वर एंड गोल्ड, दीज आर द बेस्ट डक्टाइल मेटल्स. why we could say that the reason behind is that आपको पता है कि अगर आपके पास 1 ग्राम ऑफ गोल्ड है, okay, from just 1 gram of gold you can draw 1 kilometer long wire. just imagine 1 ग्राम गोल्ड से आप 1 किलोमीटर लंबा जितना वायर जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं.
इतने 1 ग्राम गोल्ड को this much ductility gold is having. So these are quite ductile. Even silver also, that is also quite ductile. That is the reason है ना, बहुत सारी जगह पर सिल्वर, क्योंकि सिर्फ सिल्वर एक्सपेंसिव है इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं ऑन द डेली बेसिस यूज करने के, वरना सिल्वर भी उतना ही ज़्यादा वर्सटाइल है. After them, what comes? Aluminium and copper. Okay, that is the reason that they can be drawn into thin wires. They are used in electrical circuits. Okay, and since they are quite cheap, they are quite not that much expensive. That is the reason we use it on in our daily basis, we could say. Okay, so they are less expensive. I won't say that they are cheap. See what on what parameter we are saying as comparative to what silver and gold. They are not that much expensive. They are quite readily available. Okay, that is the reason they have been used. Okay, from since past so many years in the electrical circuits for electrical purposes and all. Okay, तो ये बहुत ही बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं. मैं जस्ट आपको रिकॉल करवा रही हूँ. कुछ कुछ पॉइंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना. जैसे मैंने यहाँ पर आपको इसका रीजन दिया, ये रीजन इंपॉर्टेंट है. ओके, यहाँ पर आपको जो अल्कली मेटल्स के बारे में बताया ये इंपॉर्टेंट है. तो प्रॉपर्टीज तो वही हैं लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी one more property of metals, that is metals are good conductors of heat and electricity. Okay, okay, so metals are what? These are good conductors of heat and electricity. This is the next property that metals have. Okay, तो जितने भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम देखते हैं या आज जो आप यूज़ कर रहे हैं, इवन जो बल्ब जो जल रहा है, that is because of what? That is the metal that is present in that particular electrical appliance. तो ये क्या है ऐसा कि मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना. सो द रीजन इज व्हाट? द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट? हीट. राइट, ये क्या है कि मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है ना, वो क्या है? टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो जितने भी अप्लायंसेस आप देख रहे हैं उसमें सारे के सारे कहाँ पर हैं? क्या है? मेटल्स प्रेजेंट है. ओके, दैट मेक्स them what? The very good conductors of electricity. The property of metals make them the good conductors of heat and electricity. Right, तो जितने भी हम चीज़ें देख लें है ना, चाहे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देख लें, बल्ब देख लें, वहाँ पर हमें क्या दिखता है? ये प्रॉपर्टी दिखती है कि दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज दे कैन कंडक्ट व्हाट? दे कैन कंडक्ट थर्मल कंडक्टिविटी एज वेल. ओके, तो ये प्रॉपर्टी की वजह से ही वो क्या बनते हैं? दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब थर्मल कंडक्शन मतलब क्या? देखिए, थर्मल कंडक्शन मीन्स कंडक्शन ऑफ हीट इन मेटल्स. ओके, दिस इज नोन एज व्हाट? थर्मल कंडक्शन. सो बोथ metals have this electrical conduction, okay, and they have thermal conduction as well. तो मेरा ये क्वेश्चन है आपको कि ठीक है, metals are very good conductors of electricity and heat as well, but what is the property, what thing they have that makes the metals you know become a very good conductors? ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिससे जो मेटल्स है ना, दे कैन कंडक्ट हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी? तो देखिए, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना. जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दे आर मूविंग फ्रीली इन एन एटम. अब कैसे हो रहा है ये? देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आयरन रॉड है ना, एंड इफ यू स्टार्ट हीटिंग इट फ्रॉम वन एंड, व्हाट विल हैपन? अगर आपके पास ये आयरन रॉड है, ओके, ठीक है, और इसको आपने क्या कर दिया है? यहाँ से एक साइड से आपने इसको हीट देना स्टार्ट कर दिया. व्हाट विल हैपन? सून द अदर एंड विल ऑब्जर्व द हीट, है ना. आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने इस साइड से भी पकड़ के रखा है तो आपको यहाँ से चलते वक्त ये क्या महसूस होगा? वो हीट जो है वो महसूस होगी. ठीक है, तो क्या हो रही है? हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? दिस इज बिकॉज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर आयरन एटम. अब ये कैसे कर रहे हैं? ड्यू टू द थर्मल कंडक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स वेयर दे कैन कंडक्ट थर्मल कंडक्टिविटी, है ना. ये वही प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं?
So this property is due to the presence of what? Free electrons. Okay, so whenever you are trying, you are increasing the heat, क्या हो रहा है यहाँ पर, जो एटम्स है ना, वो क्या होते हैं, वो दे स्टार्ट मूविंग, बराबर है। देखिए आपको मैंने क्या कहा था कि मेटल्स हैव दिस प्रॉपर्टी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। सो एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि इवन एट रूम टेम्परेचर जो उनके इलेक्ट्रॉन्स है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है फ्रॉम वैलेंस शेल, दे कैन बी रिमूव्ड आउट वेरी इजीली। आप समझ रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पे भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना वैलेंस शेल में, दे कैन बी रिमूव आउट। सो वेन एवर यू आर इंक्रीजिंग द हीट, और जब आप टेम्परेचर उसका बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है, वो एटम्स, दीज एटम्स आर गेनिंग व्हाट, द हीट, राइट। सो वो क्या करते हैं, हीट गेन करते हैं, एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग ऑन देयर इन देयर मीन पोजिशन। क्या करते हैं वो, दे स्टार्ट vibrating in their mean position, जिससे क्या होता है, they, this property makes them what, the electrons present in that atom, they start moving freely। वो क्या करते हैं, बहुत ही फ्रीली जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री कैसे है, वो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ चुका है ना, तभी वो फ्रीली मूव कर रहा है। वहाँ पर देखिए बहुत सारे एटम्स हैं एक मेटल के अंदर, आपको पता है बहुत सारे मेटल मेटल प्रेजेंट होते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेटल प्रेजेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक मेटल में। अब सोचिए उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री हो गए हैं, है ना। ये सारे यहाँ पर सोचिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये फ्री हो गए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर मूविंग आउटसाइड इनसाइड। तो ये जब फ्रीली मूव करते हैं तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। whenever they are collide whenever they collide with each other, what happens, transfer of energy takes place, है ना। So what is happening, these electrons when they collide, they transfer the energy from one to another and so on। तो होता क्या है, जब इस तरीके का ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है ना, होते 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 क्या होगा, अब यहाँ से ट्रांसफर समझ लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये होते होते कहाँ तक जाएगा, उसके एकदम लास्ट एंड तक जाएगा, and thus you can feel the heat over here। okay, thus you can feel the heat over here। है तो बहुत easy कि यहाँ से वन एंड से स्टार्ट हुई है हीट और हमें थोड़ी देर में लास्ट एंड तक महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, ये रिस्पॉन्सिबल है ना। तो एक एटम में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे व्हेन दे आर मूविंग all around freely, what happen, they collide with each other, and from this collision what is happening, transfer of energy, transfer of that particular energy is going on, है ना। So from one to another and so on, ठीक है। और होते होते फिर क्या होता है, ये एनर्जी आपको कहाँ फील होती है, एट दी एंड। समझ में आ रहा है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि मेटल्स आर व्हाट, दीज आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दिस पर्टिकुलर, दिस इज applied for not only thermal conduction, this is applied for electrical conduction as well, है ना। You might have studied in physics as well in your electricity chapter। क्या होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, बताइए, सोचिए, दैट इज नथिंग बट मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। वो क्या है, आप जो पर्टिकुलर कंडक्शन कैसे हो रहा है ना, कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं वो, कि जहाँ आपके जो फ्री पार्टिकल्स, वो जो फ्री पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर कंडक्टिंग। सो वी ऑलवेज से दैट मूविंग पार्टिकल्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज नथिंग बट व्हाट, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो ये बेसिक आपको पता ही है ना, बेसिक आपको पता ही है कि moving charges they conduct electricity। तो same happens in electrical appliances as well, and in this way electron is transferring the energy from one to another and another। so free electrons are helping it to do so, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, you can feel the heat at the other end। तो हम क्या कहते हैं, इसी रीजन से कि मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पर बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एटम्स के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर्टिकुलरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हेल्प करते हैं इस प्रॉपर्टी को। ओके, तो जब कभी भी बात आए कि कौन से मेटल सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर होते हैं, तो सिल्वर, सिल्वर इज द ओनली मेटल जिसको हम बोल सकते हैं दिस इज द बेस्ट मेटल, ओके,
which conducts heat and electricity. जो सिल्वर बैटरीज में आपने देखा होगा, it's just कि it is quite expensive, we don't use it on a regular basis, and instead of it we use aluminium or copper. ठीक है, तो हम एल्यूमिनियम या फिर कॉपर का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज, इसके और भी हैं, आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, अभी आप इन सभी को नोट करके रखिए, है ना, जो मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई हैं उन्हें अच्छे से नोट करके रखिए एंड अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। गुड डे स्टूडेंट्स, टेक केयर।